Good morning, students. Myself, Major Komal Katyal, Department of Zoology, GK Gowani Government College, Bhinmal. Today, we will discuss about the phylum Porifera. आज हम बात करेंगे संघ Porifera. सबसे पहले इसके सामान्य लक्षणों के बारे में. The term Porifera is derived from Latin word porus and fera means bearing. So those animal in which pores are present, or in simple language we can say the pore bearing animals. The pore bearing animals are multicellular, the cellular grade of body organization. The body is with pores, the ostia, absence of true tissues and organs. There is no nervous system. Adults are sessile and attached to the substratum. The skeleton is made up of calcareous spicules, siliceous spicules, or spongin fibers, which is proteinous in nature or combination, and they are mostly aquatic, found in the sea water, except a species Spongilidae, in which 150 species are known. जो संघ पॉरीफेरा के जंतु हैं वो बहुकोशिक होते हैं, जिनके अंदर कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है. शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं. वास्तविक उत्तक और अंगों का अभाव होता है. तंत्रिका तंत्र भी अनुपस्थित रहता है. जो वयस्क जंतु हैं वो स्थानबद्ध होते हैं एवं किसी भी स्थान से जुड़े रहते हैं, और उनका अंदर जो कंकाल है वो कैल्शियमयी या सिलिकामयी कंटिकाओं या स्पॉन्जिन तंतुओं का बना हुआ होता है. अधिकतर समुद्रवासी जंतु होते हैं. The body form is vase-like, cylindrical, tubular, cushion-shaped and many-branched. The presence of characteristic canal system having many pores, ostia for intake of water, canal and chambers that serve for the flow of water, and one or more water exits the oscula. Singular word is the osculum. कहने का मतलब यह है कि इन जंतुओं के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है, जिसमें असंख्य छिद्र होते हैं जिनसे पानी शरीर के अंदर प्रवेशित होता है, और नाले और कक्ष होते हैं जो जल प्रवाह को बनाए रखते हैं, तथा जल निकास हेतु इनमें एक या एक से अधिक ऑस्कुला पाए जाते हैं. It is composed of 3 body layers: the outermost pinacocytes, inner one the non-living mesoglea, and then the collar cells. कहने का मतलब यह है कि सबसे बाहर का स्तर चपटी कोशिकाओं का होता है, पिनाकोसाइट जिनको हम कहते हैं. इसके पश्चात मीसोग्लिया होता है, और जो अंदर वाला सतह है उसमें कॉलर सेल्स होती हैं जो भोज्य पदार्थ को पकड़ने और जल प्रवाह को बनाने में सहायता प्रदान करती हैं. दे एग्जिबिट एसिमेट्री और रेडियल सिमेट्री. उनके अंदर सममिति या तो वो असममित होते हैं या अरीय सममिति पाई जाती है. और जनन, अगर अलैंगिक की बात करें तो मुकुलन और जिम्यूल द्वारा, और अगर लैंगिक की बात करें तो अंडे और शुक्राणु के निषेचन के पश्चात सामान्य रूप से होता है. The reproduction is asexual by buds and gemmules, while sexual by presence of male and female gametes, the sperm and eggs. If you look at the simple sponge morphology, you can see there is presence of a osculum lined by the oscular fringe, the presence of collar cell in the spongocoel, the porocyte, which is responsible for controlling the intake of water in through the ostia. The mesophile is there where amoeboid cells are present, and there are present of large number of food vacuoles.
There are three body types in the case of sponges. One is the ascon type, second is the cycon type, and the third one is the leucon type. If you look at this ascon type, here you can see that there is presence of ostia and osculum, and there is a body cavity in the form of spongocoel. The second type is the cycon type, where there is folding in the body wall, formation of the radial and incurrent canal, presence of the dermal pores, and a spongocoel. The third one is the leucon type, where there is presence of the dermal pores, then the flagellated chambers or the choanocytic chamber, and the excurrent canal and the osculum. The flow of water in the case of ascon type is from ostia to spongocoel and from osculum to the outside. In the case of cycon type, the water enters from the dermal pores, then it goes to the incurrent canal, and from prosopyle to the radial canal, and from apopyle to the spongocoel, and then outside through osculum. In case of leucon type, the water again enters from the dermal pores, goes to the flagellated chambers, and from flagellated chamber goes to the excurrent canal, and from excurrent canal to the osculum. So these are the three body forms you can see in the case of sponges. One, the simple type, ascon type, second one, the cycon type, and the third one, the leucon type. तीन तरह के स्पंज के अंदर आपको शारीरिक संरचना दिख सकती है। एस्कॉन प्रकार, जिसमें एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र होता है, साइकॉन जिसमें साइकॉन प्रकार का नाल तंत्र होता है, और ल्यूकॉन जिसमें ल्यूकॉन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। This is the microscopic view of a poriferan wall. Let us discuss about the spicules. The skeleton is made up of calcium carbonate or the calcareous spicules. It may be made up of siliceous spicules or the spongin fibers, which are proteinaceous in nature. As far as the different cells are concerned in case of the sponges, first we will discuss about the archaeocyte. They are amoeboid cells. It means they are the wandering cells. They receive food from choanocytes, and they are totipotent by nature, as they can be differentiated into other cell types of a sponges. The sclerocyte or the scleroblast, they are responsible for producing the spicules according to nature of the product known as calcoblast, silicoblast और spongioblast. वह कोशिकाएं जो कंटिकाओं का निर्माण करती हैं, और कंटिकाओं के अंदर अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो उनको कैल्कोब्लास्ट, अगर सिलिका होगा तो सिलिकोब्लास्ट, और अगर स्पॉन्जिन होगा तो स्पॉन्जियोब्लास्ट कहा जाता है। The mesohyle or the mesoglia, the gelatinous matrix is there in which loosely cells are arranged. Pinacocytes, they are present either on the outer surface of sponge known as exopinacoderm and on the epithelium lining of the canal, the endopinacoderm. कहने का मतलब ये है कि स्पंज के शरीर की बाहरी सतह पर एक्सोपिनाकोडर्म के रूप में, और जो कक्ष या नाल हैं उनकी अंदर की सतह पर कुछ जगह जो स्तर होता है वो चपटी पिनेकोसाइट का बना हुआ होता है। दे आर द लार्ज फ्लैटेंड एंड पॉलीगोनल सेल्स। ये बड़ी चपटी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर जो संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा होती है। They are highly contractile cells, can greatly increase or reduce the size of a sponge. As you must have been observed that we can easily reduce the size of sponge by pressing, and again it retains its size. The choanocytes, which are known as the flagellated cell or collar cells, the one end is generally present in the mesenchyme,
which is the base, and the other end in the spongiocoel or the flagellated chamber. The flagella is responsible for creating the water current, and the collar is responsible for trapping the food present in the flowing water, and then they passes the food material to the archaeocyte for carrying out the process of digestion. The other type of cell include the porocyte, which is responsible for forming the pore, the schizocytes, which have lobose pseudopodia and filled with food material. So we were talking about the schizocytes. They have a lobose pseudopodia, which is filled with the food reserves, acting as the storage cells. Then the myocytes, which are fusiform contractile cells, as the name indicates, present around the ostia and oscula and form a sort of sphincter. कहने का मतलब ये है पेशी कोशिकाओं के समान इनकी संरचना होती है और ये क्या करते हैं, जो छिद्र हैं वहां पर एक अवरोधनी का निर्माण करते हैं जिससे ये जल की मात्रा जो अंदर या बाहर होती है उसको नियंत्रित कर सकते हैं. The skeletal elements, which include the various type of spicules and spongin fibers, as you can see the examples are given in the case of hexaactinellida, the siliceous spicules, the siliceous spicules of Damose spongy, the spongin fiber, and the calcareous spicules. As far as the physiology is concerned, the large sponges filters 1500 liters of water in a day. The choanocytes are responsible for phagocytosis, archaeocytes for the digestion, and as definite tissues and organs are absent, so no specific respiratory, excretory, or the nervous system. With this, I've completed my first part of lecture on phylum Porifera. इसके साथ ही जो संघ पॉरीफेरा के सामान्य लक्षण पर मेरा जो पहला व्याख्यान है वो समाप्त होता है. धन्यवाद.